Looking back at being young and feeling small in the world, playing with angels, holy pages, busy doing the work. Hey guys, welcome back to my channel. This is your girl अंगिरा. So कुछ दिन पहले मैंने अपना एक वीडियो शूट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को गॉथ स्टाइल के बारे में बोला था, जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत सारे गॉथ फैशन के बारे में डिस्क्राइब किया था, जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ गॉथ फैशन बोला था. बट एज अ डिज़ाइनर मैं वहाँ पर कहीं ना कहीं फील ऐसा कर रही थी, अरे यार मैंने तो पूरा दिखा दिया बना बनाए कपड़ों में, तो मैंने क्या एज अ डिज़ाइनर मैंने कुछ क्रिएट किया ही नहीं. सो दैट मेक्स मी अपसेट. तो मैंने आप लोगों के लिए आप लोगों के लिए फिर मैंने एक प्लानिंग किया कि कुछ तो करते हैं. तो फिर मैंने सोचा कि मैंने देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास उतना बजट नहीं था कि मैं एक नया फैब्रिक सोर्स करके कुछ डेवलप करूँ या फिर एक ड्रेस रेडी करूँ या फिर पूरा एक कलेक्शन रेडी करूँ. उतना मेरे पास फंडिंग नहीं था. सो मैंने क्या किया, मेरे पुराने कलेक्शन में था टी शर्ट, उसी को ही मैंने थोड़ा बहुत लाइक DIY किया, लाइक नॉट प्रॉपर DIY, उसको थोड़ा बहुत क्या बता सकती हूँ, कस्टमाइजिंग किया और मैं आप लोगों के लिए रेडी किया. तो लेट्स सी. तो देखना चाहते हो ना कि कैसा लग रहा है. ऑब्वियसली गाइज प्लेस योर कमेंट कि ये लुक सक्सेसफुल हुआ या नहीं. सो लेट्स स्टार्ट. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like? सो फाइनली गाइस टी शर्ट बन गया है. ऑलमोस्ट मैं पूरा नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मुझे शोल्डर पैड्स लगाना बचा है, जो कि मैं खुद नहीं लगा सकती बिकॉज मेरे पास कोई मशीन नहीं है, या फिर नॉर्मल टाका ही लगाना है. तो मैं फाइंड आउट करती हूँ मैं कैसे करूँगी. तो मैं पहले आपको टी शर्ट दिखा देती हूँ. So the t-shirt is from the collection Surrealism. The inspiration behind the t-shirt is like a baby floating inside a cocoon, and the cocoon depicts like a heart of a mother and a womb of a mother, and the blue butterfly depicts those who try to aware us like from the harsh reality. Okay guys, तो finally हमारा जो t-shirt है देख सकते हो वो बन चुका है. लाइक मैंने कुछ चेंजेस किया है, जैसे कि मैंने शोल्डर पैड डालने का बात किया था, बट वो मैंने डाला नहीं क्योंकि वो ना थोड़ा बहुत ज़ॉम्बी टाइप फील दे रहा था. मतलब मुझे समझ आ रहा है मैं ग्रंज गॉथ टाइप लुक बना रही हूँ, बट स्टिल इट वाज नॉट गिविंग दैट परफेक्ट लुक जो मैंने इमेजिन या फिर डिज़ाइन किया था. तो मैंने उसको कैंसिल किया. फिर मैंने उसका सारे टाके वाके निकाल के उसका पूरा जो लुक था मैंने उसको निकाला. पहले जो शोल्डर पैड्स था, अब हम करने वाले हैं उसका लाइक स्टाइलिंग लुक. लाइक हम इसको स्टाइल करने वाले हैं कि इसे कैसे हम स्टाइल कर सकते हैं इस टी शर्ट को, जो आपको दिख नहीं रहा होगा ठीक से, मैंने ऐसे बस दिखा रही हूँ. सो अब टाइम आ रहा है उसको स्टाइलिंग करने का. सो होल्ड योर ब्रेथ. लाइक अब हम बनाने वाले स्टाइलिंग वीडियो. बट पिछली बार मैंने गॉथ फैशन में मैंने कोई फेस पे जो मेकअप किया था मैंने उसका कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था. इस बार मैं आप लोगों के लिए फेस मेकअप करने वाली हूँ आप लोगों के सामने. सो स्टे ट्यून्ड, होल्ड योर ब्रेथ एंड लेट्स स्टार्ट. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you gotta do it right now. These brothers my guys, know that they fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go and move dumb. Back and forth, push and
of you. You gonna make a move. I don't make this easy for you. It's not intentional. I'm not responsible. I never play the game. But if it's in my face, I don't make it easy for you. Everyone is an option. I don't think that's a problem. No, my eyes make me sweet, but most people don't fuck with me. I don't make this easy for you. I don't make this easy for you. And now is the time between you and I. Get out of your head, step into my mind. Be that easy for you. I could be that easy for you. Baby, I like to burn. How do you wanna feel? Tell me your fantasies as you decide. So guys, what do you think about the look? Please comment me down below. So now I am wearing a mid with silver chain. So a silver jewelry really complements a goth look. Like कुछ भी silver jewelry पहन लो, it really give you a लाइक गॉथ लुक को बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट करता है. एंड इफ़ यू फॉर मी अकॉर्डिंग टू मी इन दिस डिज़ाइन मैं ज़्यादा ज्वेलरी प्रेफर इसलिए नहीं करूँगी बिकॉज ऑलरेडी इन माई टी शर्ट देर आर टू मैनी एलिमेंट्स. लाइक देर इज़ ऑलरेडी ब्लीच इफेक्ट, ऑलरेडी हैंड इम्प्रिंट, द मेन एलिमेंट. सो वो अगर मैं ज़्यादा ज्वेलरीज वगैरह डाल लूँगी टी शर्ट के ऊपर तो आई थिंक इट विल क्रिएट अ कैओस. लाइक एलिमेंट्स पे फोकस नहीं होगा, ज़्यादा कैओस हो जाएगा. बट यू कैन ऑल्सो वेयर सम लाइक हेड गियर्स. लाइक नाउ आई एम वेयरिंग अ बकेट हैट. तो आप भी ऐसे हेयर बैंड्स ट्राई कर सकते हो या फिर क्लिप्स ट्राई कर सकते हो या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्स, हैट्स, कुछ भी ट्राई कर सकते हो. नाउ आई एम वेयरिंग लाइक माई सेकेंड स्टाइलिंग लुक इज आई एम वेयरिंग अ leather pant because leather pant gives that next level effect of goth. Like पहली बात तो ये leather pant बहुत skinny है. You can wear ankle length boots. I am wearing a beret to give it a classic Victorian and also like kind of goth look. हल्का मतलब mix match वाला, and you can complement your look with a black bag. That's all. Thank you guys for watching my video. So please subscribe, whoever not subscribed and watching the video, please subscribe. I really need your support, really need your help, and please stay tuned if you want to look like और अच्छा ऐसे videos like goth look. and मैं आगे और एक वीडियो आने वाला है जो मैं ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है शॉर्ट्स में, बट अभी मैंने बनाया नहीं बिकॉज ऑफ दिस t-shirt vlog. So please stay tuned and please support me and like me, subscribe me please guys. Thank you.